Hello everyone, it's me Sakshi. Today we will cover the summary of two story about flying. It is taken from class 10 English book, The First Flight. The chapter name is number 1, His First Flight by Lame O Flattery. Number 2, Black Aeroplane, Frederick Forsti. So let's get started the video. We will cover the introduction. Here are two stories that tell us about the courage and tireless effort. Means इसमें दो स्टोरीज हैं, उनमें ये दिखाया गया है कैसे करेज से और ट्रायलेस एफर्ट्स मतलब कि बहुत ट्राई करने के बाद जो इंसान थक जाता है फिर भी वो कोशिश करता है वही सक्सेस पाता है। इसमें इस स्टोरी में इन लोगों के बारे में बताया गया है, इन दो वर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट, his first flight by lame of flattery, a seagull conquer his flight possible and he learns to fly। मीन्स जो पहली स्टोरी है उसमें बताया गया जो फर्स्ट फ्लाइट है वो लिखा गया है लेम ऑफ फ्लैटरी के द्वारा। उन्होंने बताया कैसे उन्होंने अपनी फ्लाइट को कॉन्कर किया, मतलब कैसे बचाया और पॉसिबली उड़ना सीखा। इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट, इन द सेकेंड स्टोरी द राइटर फ्रेडरिक फॉस्टी गिव्स एन अकाउंट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस। सेकेंड स्टोरी में बताया गया है वो अपने बारे में बता रहे उन्होंने कैसे अपनी फ्लाइट अपनी जो फ्लाइट थी उसको बचाया, एरोप्लेन को बचा के उन्होंने उड़ना सीखा। नेक्स्ट, ही वॉज फ्लाइंग एन ओल्ड डैकोर्ड एयरप्लेन ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड, सडनली ही वॉज सराउंडेड बाय ब्लैक क्लाउड्स एंड स्टॉर्म। मतलब कि जो सेकेंड स्टोरी है उसमें बताया गया है कैसे उन्होंने उड़ना सीखा ही था कि जो है आसपास काले बादल लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि कैसे उन्होंने काले बादलों से लड़के अपनी फ़्लाइट को सेफली लैंड करवाया और कैसे अपनी जान बचाई। नेक्स्ट, वी लर्न फ्रॉम दीज स्टोरीज दैट करेज एंड हार्ड वर्क आर नेसेसरी फॉर एनी सक्सेस। मीन्स इसमें बताया गया है अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसे निरंतर प्रयास करना पड़ेगा और बिना रुके करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रुक जाएगा तो वो मतलब लेजीनेस उसको पर हावी हो जाएगी। नेक्स्ट, अबाउट द ऑथर्स। स्टोरी 1, लेम ऑफ फ्लैटरी वॉज बॉर्न ऑन 28 अगस्त 1896 इन कंट्री गेलवे आयरलैंड। ही वॉज एन आयरिश नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड मेजर फिगर इन आयरिश लिटरेरी Renaissance. His works combine visual naturalism, psychological analysis, poetry, and biting satires with an abiding respect for the Irish people. मीन्स इसमें बताया गया जो लेम ऑफ फ्लैटरी थे उनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1896 में। वो भी कंट्री आयरलैंड थी और गेलवे सिटी थी। और ही वॉज अ राइटर थे, वो राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, मेजर फिगर थे आयरिश में, मतलब वो जो कंट्री थी वहाँ पे वो बहुत जाने माने पहचाने राइटर थे। और वो अपने काम को नेचुरली करते थे, साइकोलॉजिकल लिखते थे, साइकोलॉजी सोच के लिखते थे, पोइट्री लिखते थे और वहाँ पे रिस्पेक्टफुली शॉर्ट स्टोरी लिखते थे आयरिश के पीपल्स के लिए। सेकेंड स्टोरी, फ्रेडरिक फॉरेस्ट्री was born on 25th August 1938 in England. He is an English author, journalist, spy, and occasionally political commentator. Before becoming a journalist, he joined the RAF and was a jet fighter. Now we will cover the summary. Story 1. His first flight by lame of flattery tells about the need for courage and self-confidence to overcome fears in life. A young seagull looked departedly at the vast expanse of water and stretched before him. His parents, brother, and little sister had flown away and left him alone on the rock. मीन्स ये जो फर्स्ट फ्लाइट है जो कि लेम ऑफ फ्लैटरी के द्वारा लिखी गई है उसमें बताया गया है उसको के अंदर कि उसको विश्वास रखना और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके लाइफ में डर बहुत था। एक छोटा सा सेगल बॉय, एक छोटा सा बॉय बहुत दूर से देख रहा है कि उसकी जो फैमिली है पानी के द्वारा बहा दी गई है और वो अपने पेरेंट्स भाई बहनों से बिछड़ चुका है और वो अकेले रॉक पे पड़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट,
There was no food and he was hungry. He couldn't fly. Many at times he had tried to run forward to the brink of the edges, flapped his wings, but he was afraid and felt that his wings would not support him. Despite making countless efforts, his parents could not persuade him to make an attempt to fly. मीन्स इसमें बताया गया है कि उसको इतनी भूख लगी होती है क्योंकि उसकी फैमिली भी बिछड़ चुकी होती है, और ये एक्सप्लेन करता है कि जो है वो यहाँ से हटने की कोशिश करता है बट वो हट नहीं पाता है, और उसका जो डर होता है उसके अंदर वो और बढ़ता जाता है, और ना उसके पेरेंट्स उसको बचाने आते हैं. नेक्स्ट, he was starving and felt that he would die if he did not get any food. मतलब वो मर जाएगा अगर उसे खाना नहीं मिला. He saw his mother tearing a piece of fish with her beak. When he cried out to her, she just screamed back mockingly. Then he saw his mother approaching towards him with food, which made him very happy. But she stopped at a distance. He was very hungry, so he divided at a fish. His mother flew upward and he started falling. He was terrified for a moment, but then he realized that he was flying. In this way, he made his first flight. Means वो खाना खाने के लिए इतना परेशान था, वो खाने को ढूंढ रहा था, और फिर वो देखता है कि उसकी माँ उस पर, वो उस माँ के पास जाता है खाना मांगने, लेकिन उसकी माँ उस पर चिल्ला देती है. फिर वो देखता है कि उसकी माँ उसको अप्रोच करे, उसके पास आई और उसको खाना देने के बहाने, और वो हवा में खाना छोड़ के भाग जाती हैं. तो वो देखता है कि वो भी उड़ रहा होता है. तो वो इस तरीके से अपनी पहली फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान लेता है. नेक्स्ट, in the second story, the black aeroplane seems to be a mysterious story. However, it is clearly convey us the message that no one must give up in the face of troubles and obstacles. One need to be courageous and fearless. Only then can one hope to achieve success in one's mission. मीन्स इसमें एक्सप्लेन किया गया है, अगर कोई भी इंसान के सामने उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आता है, उसको कोई काम करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसे डरना नहीं चाहिए, उसे उसका सामना करना चाहिए, तभी वो सक्सेस को पा सकता है, अपने मिशन को पूरा कर सकता है. नेक्स्ट, द नरेटर फ्लाइंग इन डेकोर्ट ओवर फ्रांस इज suddenly in the midst of a terrible storm. He has inadequate fuel to fly up and over the stormy clouds. His all means of communication is snapped. Even his compass does not work. He finds himself entirely on his own way on when he see a pilot of a mysterious plane backing to him to follow him. He takes the risk and follow him like a child. With heroic efforts he is able to land his plane safely. मीन्स इसमें बताया गया है जब उसके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई और उसके पास कोई भी हेल्प कर लेने का, सहायता कर लेने का कोई भी रीज़न नहीं बचा, कोई भी रीज़न नहीं बचा, तो वो परेशान हो गया, उसका कंपास भी काम नहीं कर रहा था, तो उसने एक प्लेन को जाते हुए देखा, उसने उसको फॉलो किया और वहाँ पे उसने सेफली लैंड भी किया. नेक्स्ट, टाइटल स्टोरी 1. द टाइटल ऑफ द स्टोरी हीज फर्स्ट फ्लाइट इज अप्रोप्रिएट. द स्टोरी रिलेट्स टू द यंग Sugal Meridian after he is stuck up in his high nest as a result of his fear of flying. The title focuses on a particular situation where a young seagull is trying to fly, and in his difficulty, he too, like his family, wants to fly and go down and catch and eat fish as his brother and sister are doing. But he finds no courage to take his first step. He became hungry. Hunger forced him to come to a ledge. When
he suddenly falls down. He is seized with sudden panic, but soon his wings are spread. He's, he finds himself flying. The first flight fills him with great joy and thrills. He goes up and down and thus overcomes his fear. मीन्स इसमें बताएंगे सेगल फिश होती है जो उड़ती है और मछली नीचे पानी से खाती है कैच कर कर करके। तो उसके भाई बहन उसके मम्मी पापा सब फिश खा रहे हैं बट वो उसको भूख भी लग रही है, वो नहीं कर पा रहा है। बट उसकी भूख ने उसको वो काम करने के लिए प्रेरित किया, उसने वो काम किया। उसके बाद वो आराम से वो पानी में गिरते गिरते बचा, तो उसी समय उसके पंख फैल गए और वो फिश को कैच करके खाने लगा और उड़ने लगा। दिस इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी, द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन इज क्वाइट अप्रोप्रिएट। द नरेटर इंटेंड्स to focus on the fact of the mysterious black color aeroplane throughout the story. When he is seen flying in his Dakar over France, finds a mysterious aeroplane flying beside his, he is greatly surprised. The pilot of his mysterious plane seems to ask him follow him. It is the black mysterious plane that helps him and asks the narrator to follow him, making the narrators and his plane land safely. And when he makes the inquiry about the plane, he is shocked to learn that there had been no other plane than his in the sky that night. We thus made to think beyond the text. What is the reality of the black aeroplane? Who was plotting? Uh, was a ghost or a supernatural being out or to help the author in distress? No rational answer to such questions are possible. The black aeroplane continues to haunt us. मीन्स इसमें बताया गया है जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट थे वो अकेले थे उस दिन, उस रात को अकेले सैर कर रहे थे स्काई में और वहाँ पे और कोई नहीं था। वहाँ पे स्ट्रोम आ गया, मतलब हवाएं चलने लगी, काले बादल घेर लिए और वहाँ पे उन्हें बस खाली एक प्लेन मिला, उसके थ्रू वो नीचे लैंड सेफली कर पाए। नेक्स्ट themes of the story 1. The story his first flight brings home to point that fear is the most negative feeling that blocks one's progress. One can conquer it with courage and sincere efforts. It is important to take the first important step, which is not always easy. In the story, the young Segul, afraid of flying, remains in his nest as his parents and siblings fly away, turns isolated, now known that he will starve to death if he does not fly down from his high nest. It is his mother who, with a fish in her beak, comes near the edge, fall down, stumbles, but then his wings are spread. The first fear he experiences is gone. He finds himself flying. He soars high and then comes down to touch the green sea. In this way, he finally overcome his and learn how to fly. मीन्स इसमें बताया गया उसने कैसे अपने फियर को ओवरकम किया, उसकी माँ ने उसकी कैसे हेल्प की और वो कैसे ये सब ओवरकम कर। द नेक्स्ट स्टोरी, द थीम्स ऑफ द नेक्स्ट स्टोरी इज इट इज़ डिफिकल्ट to decide whether the story The Black Aeroplane is the mysterious story or not. It seems sometimes to the scientific world the way in which the story depict on one hand we may doubt, on the other we may not deny the existence of such supernatural happenings. We do not know as reader how who was the pilot of the mysterious black aeroplane who guided the narrator to land his Dakar safely.
एडमिस्ट आ डेंजरस रूम। मीन्स इसमें बताया गया है सुपर नेचुरल पावर के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है, और इसमें बताया गया है कैसे जो नरेटर था स्टोरी का वो कैसे लैंड करता है, वो भी सेफली, और वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके वहाँ तक आता है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।